Hello dear students, as I committed you in the previous video, in this video we will be discussing a case study for the CBSE board examination of BST which is to be held tomorrow, that is 17th May 2022. Yes, you have to be very careful now. Recently in the last 2 or 4 years, CBSE is coming out with a number of case study type of questions. 80% के आसपास very few questions are given the direct questions. If you look at the sample paper which is issued by the CBSE for the term 2 board examination of 2022, itself it can be understood. Very few questions are there, the direct type of question. तो हम लोग 2-4 क्वेश्चन सैम्पल पेपर से डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल द केस स्टडी. You just keep it the sample paper with you, so for a better understanding. So if we look at the question number 1 of the sample paper, the term 2 of the board, which is issued by the CBSE for the board examination of 2022. First question is identify and explain the two sources of the source of recruitment which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled. ये क्वेश्चन बहुत ही नेगेटिव टाइप से दिया गया है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. नेगेटिव टाइप में कैन नॉट बी यूज्ड, इट इज नॉट लाइक दैट इट विल बी यूज्ड. व्हाट विल बी द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ऐसा दे सकता था, नहीं दिया, नेगेटिव वे में दे दिया क्वेश्चन. तो आंसर विल बी टू सोर्सेज ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट होगा. मैंने पहले भी आपको स्टाफिंग फंक्शन और मैनेजमेंट चैप्टर में बताया था कि रिक्रूटमेंट सोर्सेज और रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं हर साल. तो यहाँ पर टू जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा वो होगा ट्रांसफर एंड प्रमोशन. दैट इज वेरी इजी. यही पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई बोला और एक्सप्लेन करने भी बोला है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करना है. इट नाउ द फॉर द CBSE योर एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी द वेरी लॉन्गर वन, लेंथी वन. इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. दैट इज सफिशिएंट टू गेट द फुल मार्क्स इन द CBSE. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. नाउ द इन द सेकेंड क्वेश्चन द केस स्टडी इज देयर. If we look at Mica Limited in dealing in all types of cosmetic products, it is enjoying increased demand for its product during the last few years. For the purpose of expansion of the company needs rupees 100 crores as additional capital. The company decides to raise funds through the equity shares. Chirag Kapoor, the finance manager of the company, recommended that the shares may be sold through issuing houses or brokers. Identify and explain the method recommended by Mr. Kapoor through which the company can raise additional funds for expansion purposes. अभी आज ही मैंने फाइनेंशियल मार्केट पर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बताया द मेथड्स ऑफ इशूइंग shares in the primary market, that is the offer for sale. Answer will be the offer for sale. Offer for sale में है कि जो large chunk of equity share capital are sold first to the broking company or intermediary company at an agreed price, and in turn the broking or intermediary company will be issuing the share capital to the public once again at an agreed price regulated by the CBSE. तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर केस स्टडी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिंगल वर्ड और 2 or 3 वर्ड्स आर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड. यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये बात कि शेयर्स में बी सोल्ड थ्रू issuing houses or brokers. This words can say it will be understood कि obviously the offer for sale से क्वेश्चन है. तो ऑफर फॉर सेल लिखना है आपको और 1 or 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है. दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन केस स्टडी. ठीक है. देन इफ यू सी द केस स्टडी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4,
Measurement of a company's progress may involve calculation of certain ratios like gross profit ratio, net profit ratio, and return on investment, etc., at periodic intervals. Identify the function of management involved in the above context. Also briefly explain the step in the process of the identified function discussed above. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है, रेशियोज क्या है, कंप्यूटेशन रेशियोज, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो ये किस फंक्शन में आता है? ऑब्वियसली कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे आता है कि हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड चेक करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होता है, देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सेट अर्लियर, देन द एनालिसिस ऑफ डेविएशन, then find out the reason of deviation. Either the standards are to be revised or the action taken on the actual performance of the work who are responsible. So these are the steps of the controlling function of management. तो केस स्टडी में आपको यही लिखना है और आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई में करना आपको यस कंट्रोलिंग फंक्शन है और आपको स्टेप्स लिखने हैं. फुल मार्क्स यू विल गेटिंग द 2 मार्क्स, नो प्रॉब्लम. इस तरह से आपको एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इन द केस स्टडी. नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, द केस स्टडी. मिस्टर पवन कुमार, द CEO of an e-commerce startup which was facing the problem of huge employee turnover, decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue. While addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social, and emotional factors in order to motivate employee. Explain any 2 such measures discussed by him when he suggested that jobs should be made interesting so that the job itself become a source of motivation. Employees should be congratulated for good performance. Also, stability regarding future income and work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among the subordinates. क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय. तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इस केस स्टडी में कहीं भी पैसे के बारे में, मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं किया गया है. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रिलेटेड टू द मॉनेटरी बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज, बट नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में पूरा दिया. इफ यू गो थ्रू कि व्हेन ही सजेस्टेड दैट द जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग, जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना, इंपॉर्टेंट बनाना, मोर इम्पोर्टेंट, जॉब एनरिचमेंट जिसको बोलते हैं. फिर है गुड परफॉर्मेंस, रिकॉग्निशन ऑफ द एम्प्लॉय, द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड वर्क. ये सारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है फॉर द मोटिवेशन. तो आंसर विल बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला जा सकता है. इस तरह से वी हैव टू सी द केस स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी इन अ बेटर वे. इसलिए केस स्टडी आपके पास जो रीडिंग टाइम है 15 मिनट का, उसमें आप कोशिश करें कि मैक्सिमम केस स्टडी को पढ़ लें. जो आप जितना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उसको पेंसिल से मार्क कर सकते हैं. बट आप एग्जामिनेशन रूम में देखेंगे कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स एंड स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर कि क्या तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या गाइड है, या आपको पेंसिल मार्क करना है कि नहीं करना है. ठीक है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएंगे. जैसे जब आप राइटिंग टाइम आपका 10:30 से स्टार्ट होगा तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन अ बेटर वे. नाउ वी विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, द केस स्टडी. One second. Priya is a regional manager of XYZ Limited
She is a hard-working employee and is trying to reduce the wastages of resources in her company. She has set standards for performance of different activities and is ensuring that targets are met according to these standards with minimal wastage of resources. She has set up the CCTV cameras which helps her to keep a close check on the activities of the subordinates and know how the employees are performing. She also rewards the employees with bonus when these standards are met. She is trying her best to ensure a good performance of her team this year through the application of an important function of management. Explain any two benefits of the function of management highlighted above. अगर आप देखेंगे इसमें तो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड सेट जो किया जाता है किस फंक्शन में, यही से आपको आप यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन अंडरस्टैंड आंसर क्या होगा. यहाँ पर बोला गया स्टैंडर्ड सेट किया गया है, फिर उसको टारगेट को मीट करने के लिए परफॉर्मेंस पर बात किया गया है. ठीक है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. उनका दो इम्पॉर्टेंट पूछा गया, व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड. तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट बी केयरफुल. आसान है, थोड़ा केयरफुल रहना होगा केस स्टडी. यू हैव टू जस्ट पिक अप one or two words which are sufficient to identify the topic of the question and answering accordingly. This is all about the case study you have to discuss and you have to understand and could be discussed. And wishing all the best for your board examination of BST tomorrow. रीडिंग टाइम को कैपिटलाइज कीजिए. 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसको जितना आप कैपिटलाइज करेंगे आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा. आई यूज टू से एवरी टाइम टू माई स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स, आप 15 मिनट को यूज़, जो रीडिंग टाइम है उसको जितना आप अच्छा से अगर आप यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपके लिए जो राइटिंग टाइम जब 10:30 में स्टार्ट होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही एफिशिएंट होगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मैं वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए. इन कमिंग नेक्स्ट द आफ्टर BST एग्जामिनेशन आई विल बी कमिंग आउट फॉर द अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन विच इज़ टू बी हेल्ड ऑन द 23rd of this month. Thank you and take care.